गया, फिर ब्रॉन्ज वगैरह हो गया, मूर्तियाँ बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है? अपना डीएनएफ के एलिमेंट्स, ठीक है? डी के एलिमेंट्स बेसिकली। सो हमने एस पढ़ लिया, हमने पी पढ़ लिया, अभी बचा सिर्फ डीएनएफ, तो डीएनएफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका डी, सो आप देख सकते हो ये डी है, जो पीरियोडिक टेबल के ठीक बीच में, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, तो एक रास्ता एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है? बिटवीन योर एस एंड पी। सो दिस इज योर 3D सीरीज, दिस इज योर 4D एंड दिस इज योर 5D सीरीज, ठीक? तो हम अगर 3D को देखें, ठीक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसको याद करने का निमोनिक है। क्या है निमोनिक? तो देख सकते हो आप, राइट? सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, राइट? गिविंग फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजिन, ठीक है? ये निमोनिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है? सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, गिविंग फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजिन। तो कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बस एक तरीका है याद करने का, एक निमोनिक है तैयार करने का, इसका कोई मीनिंग वीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है? बस याद रखने के लिए कुछ निमोनिक्स बनाया हुआ है। इथ्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कर सकते हो, यस, ज़ेब्रा, नेवर बट, मोस्ट, टेक्नीशियन, रन, राइम्स, प्योरली, स्वीट्स एंड क्यूट। कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ये तो। यस, ज़ेब्रा, नेवर बट, मोस्ट, टेक्नीशियन, रन, राइम्स, प्योरली, स्वीट एंड क्यूट। ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये वाला निमोनिक्स? चलो आसान कर देते हैं, ठीक है? अब मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो। याद कैसे करेंगे? यारी, ठीक है? यारी जरा निभाना मौत तक, फिर से बोल रहा हूं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह परे आग में कूद जाना। रुकावट राह परे आग में कूद जाना सिर्फ निमोनिक्स है, कोई इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, इसको याद करने की तरीका है एक। समझ में आया? ये मेरा तरीका, जो आपको अच्छा लगे आप वो एडअप कर सकते हो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह परे याद में आग में कूद जाना, दिस इज योर 4D सीरीज। लिख लिया? आगे बढ़े। ये 5D सीरीज का है, ठीक है? लेंथेनम, हैप्नियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है? इसको अंग्रेजी वाला जो है, इसको याद करने का एक तरीका ये है कि लैरी हैव फन ट्रैवलिंग वर्ल्ड, रीच आउट, राइट? लैरी हैविंग फन ट्रैवलिंग वर्ल्ड, रीच आउट आयरलैंड, प्लीज आस्क हर। ये एक तरीका है याद करने का, ठीक है? एक और तरीका है, ये आसान है, और एक तरीका है मेरा वाला। तो ठीक है, अगर मजा आए तो ये याद कर सकते हो। बताओ, या इससे काम चल जाएगा? बताओ या फिर इससे काम चल जाएगा? देखो, ऐसे याद कर सकते हो, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और हो जाएगी, ठीक है? ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और हो जाएगी, ठीक है? ये मेरा वाला निमोनिक्स है, तो जो अच्छा लगे उसे आप याद कर सकते हो। तो ये था 3D 4D एंड 5D सीरीज। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है लेंथेनाइट्स। सो लेंथेनॉइड्स सेरियम से ल्यूटेटियम तक होगा, और एक्टिनाइट्स थोरियम से लॉरेंशियम तक होगा, ठीक? तो ट्रांजिशन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक को बोलते हैं। डी ब्लॉक में भी आपको 3 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो ट्रांजिशन नहीं होता, वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी। उसके बारे में हम देखेंगे, ट्रांजिशन किसे कहते हैं, इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं, ये भी हम डेफिनेशंस के थ्रू से डील करेंगे, राइट? सो बेसिकली डी ब्लॉक है आपका, ट्रांजिशन ए ब्लॉक है इनर ट्रांजिशन। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन दिस वीडियो। यहां पे ट्रांजिशन का मतलब, तो बीच में एक ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का, बिहेवियर का, नेचर का। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशनल है, वो चेंज हो रही है। जैसे हम एस से पी में आ रहे हैं, बीच की जो प्रॉपर्टीज है धीरे धीरे बदल रही है, ट्रांजिशनल केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं डी ब्लॉक को। बट IUPAC के अकॉर्डिंग, दिस इज नो डेफिनेशन, दिस इज वेरी, हाउ डू वी डिसाइड ये ट्रांजिशन हो रहा है प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में, या नहीं हो रहा है? कैसे हम डिसाइड करें? हो सकता है हम डी ब्लॉक पे पहुंच जाए, एक मेटल ऑयल की बात करें, सेलेनियम की बात करें फॉर एग्जांपल, हो सकता है उसमें हम वो विशेषता देख रहे हो कि ये तो भाई ना मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ये तो कुछ बीच का है, तो इसका मतलब क्या हम इसको बोल दें ट्रांजिशन एलिमेंट? सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन इट इज अबाउट साइंस। साइंस लीव्स नो रूल्स टू एनॉमली बिहेवियर, एनॉमलस का बात नहीं आती है, कोई भी चीज आर्बिट्ररी नहीं होती है, कोई ग्रे एरिया में नहीं आती, या तो फिर ब्लैक है या व्हाइट है। तो इसलिए आपको जरूरी है ये समझना कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, टी ब्लॉक एलिमेंट्स की, IUPAC के अकॉर्डिंग बहुत ही सटीक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो डी सबशेल में होना चाहिए, ठीक है? मेटल्स दैट हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस, इलेक्ट्रॉन जो है वो जाना चाहिए डी ब्लॉक में। तो डी जो सबशेल की बात है, जो जाना चाहिए डी सबशेल में, तो जो डी सबशेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या वो न्यूट्रल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में ही इनकम्प्लीट होना चाहिए? जी। बट एक और उसमें ट्विस्ट है, एक और टर्म्स एंड कंडीशंस की, अगर वो एक अपनी आयनिक स्टेट में भी, आयनिक स्टेट में भी एक आयन की फॉर्म में अगर हम उसको उठा रहे हैं, उसमें भी अगर उसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है, आवर जॉब इज डन, अपना काम पूरा। तो metals that have incomplete d subshell either in neutral atom or in their
इन देयर आयंस, सो इनको हम बोल रहे हैं आईयूपीएसी की डेफिनेशन से ट्रांजिशन मेटल। एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं तो आयरन उठाएं, देखिए आप बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, बट इसमें कुछ भी डी ब्लॉक हमने स्टार्ट नहीं किया। मैं यूज करने वाली हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला चैप्टर। हम बात करें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, तो देखते हैं बॉस। आयरन की बात करें अगर, न्यूट्रल स्टेट आयरन 26 एटॉमिक नंबर, 26 बोले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन तक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा 4s में, आपको पता ही है 4s और 3d, n प्लस एल रूल हम फॉलो कर रहे होते हैं। सो 4s और 3d, n प्लस एल 4 प्लस 0 3 प्लस s 0 p1 b2, तो ये n प्लस एल 3d का हो गया तो 5, और n प्लस एल 4s का तो हुआ 4, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट एंटर इनटू 4s बिफोर द 3d, तो जिसका n प्लस एल ज्यादा वो बात बाहर आता है। ठीक है, बैलेंस शेल बाहर आने चाहिए, बेसिक बात है। तो ठीक है, आपको पता है कि 4s 2 एंड देन 3d 6, बट जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूंगी तो जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं 3d6 4s2। तो जो आयरन की एक बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन 2 प्लस, इसकी आयनिक स्टेट की बात करें तो उस आयरन 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ना केवल ग्राउंड स्टेट में, ना केवल ग्राउंड स्टेट या फिर न्यूट्रल स्टेट जिसे मैं कह सकती हूँ, आयरन अपने जो अगर हम देखें उसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है, बट एक एक्साइटेड स्टेट में भी इनफैक्ट डी सबशेल इनकम्प्लीट है। प्लीज चेक अपनी जो आयनिक स्टेट है उसमें भी आयरन जो है वो इनकम्प्लीट डी सबशेल शो कर रहा है, जो कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इट्स अ थम्स अप। ठीक है, सो भाई देख लीजिए इनकम्प्लीट डी सबशेल दोनों ही स्टेट में, तो क्या आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूछने की बात ही नहीं है। किसी को कोई भी डाउट? तो आईयूपीएसी के हिसाब से सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है कि ट्रांजिशन मेटल्स उसे कहते हैं जिसके पास इनकम्प्लीट डी शार्प सेल्स हो न्यूट्रल और आयनिक फॉर्म में, या न्यूट्रल है आयनिक फॉर्म में अगर आपके पास, हाँ मतलब मेरे पास नहीं, ट्रांजिशन अगर कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, मेटल्स है डी ब्लॉक का, उसके पास इनकम्प्लीट डी शार्प सेल्स हो न्यूट्रल या फिर आयनिक फॉर्म में, देन इट इज सेड टू बी ट्रांजिशन मेटल्स, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशंस व्हेन नॉट डन इट। करते हैं जिनको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन, बिकॉज द वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स लाई इन एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। बोले तो बात सिंपल है, अगर n-1 डी फिल हो रहा है, जो डी सबशेल होगा वो होगा n-1, n इज द वैलेंस शेल, इज द हाईएस्ट, बाहर का जो 4s है फॉर एग्जांपल, तो 3d भरेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है 3d भरेगा, 2f नाम की कोई चीज नहीं होती, 3f नाम की कोई चीज नहीं होती, 4s से f स्टार्ट होता है ना? आपको पता है ये दो ही सीरीज है, 4f और 5f हमारे पास, तो हमेशा जो f होगा वो n-1 से एक कम होगा, n-2। तो अगर मैं ये n को बोल रही हूँ वैलेंस शेल, तो ये हमारा हुआ पेनल्टीमेट शेल, और ये हमारा हुआ एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल, जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल सीरियम ले लीजिए, सीरियम 58 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही हैं। तो देखो, जैसे एन हो गया, देखिए आउटर मोस्ट सेल, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू, राइट? एनर्जी लेवल का सबसे हाईएस्ट वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, वो आउटर मोस्ट सेल अगर एन है, तो n-1 को हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, और n-2 को हम बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी पेन अल्टीमेट शेल क्या है, देखो 4f, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घुसा तब हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तब हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई बात समझ में? तो डी ब्लॉक में हमने क्या देखा, आईयूपीएसी का ट्रांजिशन किसे कहते हैं, अगर न्यूट्रल या फिर आयनिक फॉर्म में अगर डी इनकम्प्लीट है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जिंक, कैडमियम और मरकरी ऐसा है, ठीक है, जो आयनिक, अपने आयनिक फॉर्म में भी और अपने न्यूट्रल फॉर्म में भी, ठीक है, उसके पास हर टाइम डी ऑर्बिटल जो है वो ऑक्युपाइड ही रहता है, वो भरा हुआ ही रहता है, राइट? सो आप देख सकते हो जिंक न्यूट्रल है 3d10, जिंक आयन है 2 प्लस, इसमें भी d10 है, कैडमियम है न्यूट्रल में तब भी d10 है, आयनिक फॉर्म में भी d10 है, मरकरी है न्यूट्रल फॉर्म में d10 है, आयनिक फॉर्म में भी d10 ही है। तो इसके वजह से, इसी की वजह से दे आर सेड टू बी योर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। तो अगर आप एक एग्जांपल लो सिल्वर का, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सिल्वर का, कॉपर का फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका न्यूट्रल फॉर्म में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी कंप्लीटली फिल्ड है, प्लस फॉर्म में भी डी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन प्लस 2 में देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड है आपका डी, इसी वजह से सिल्वर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का दर्जा देते हैं, राइट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इसको बोलते हैं। तो कोई भी आयनिक फॉर्म में हो या फिर न्यूट्रल फॉर्म में हो, अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट डी सबसेल है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? किसी को कोई भी डाउट, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? चलो फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का देखेंगे, ओके, इस पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड जनरल प्रॉपर्टी। अगर पोजीशन देखोगे तो दिख रहा है साफ तौर से, एस है, पी है, बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑफ प्रिंसिपल आएगा, मतलब सबसे पहले वो शेल भरेगा जिसका एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा जिसका एनर्जी, फिर वो भरेगा, फिर उससे ज्यादा, ऑफ प्रिंसिपल, n प्लस n रूल, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर योर ट्रांजिशन, फॉर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेट्स डिस्कस दिस ओवर दिस वीडियो।
एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात पता चल जाना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। क्या एस में आपको मैं एक बात बता चुकी हूँ, एक है एनएस और जो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं वो है n-1d। ये बात तो बच्चे को समझ में आ चुकी है। अब इनके जो सुपरस्क्रिप्ट है ना वो क्या है भाई? व्हाट अबाउट द सुपरस्क्रिप्ट? Will there be ns2 only? And here the d can be 1 to 10 because we know the criteria. There has to be the electrons going in the d subshell. So 1 to 10 d में तो होने जरूरी है. How about ns? Has it? Is it supposed to be only ns2? And this can be your options. What do you think? A or B? किसके साथ जाएंगे आप? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? तो ये जरूरी है, जैसे ही आप कॉपर को दिमाग में रख लीजिए, क्रोमियम को रख लीजिए। 3D सीरीज अपनी फेवरेट है ना बस, तो आप 3D सीरीज को याद कर लीजिए। क्रोमियम आप देख लीजिए 4s1 3d5, आप कॉपर याद कर लीजिए 3d 4s1 3d10। सो इलेक्ट्रॉन्स हियर कैन बी 1 to 2, it can be either 1 or 2, both are acceptable and hence the general electronic configuration looks like this. n-1d 1 to 10, ns 1 to 2। आप देख लीजिए जो d ऑर्बिटल फिल हो रहा है वो इनर सबशेल है, राइट? वो इनर आई शुड से इनर शेल है, राइट? इनर शेल है, आउटर शेल है ns, ये इनर शेल है n-1। अब ऑफ कोर्स जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आ रही है तो आप सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D की डिवाइस कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है? सभी को पता है कि जब हम बात कर रहे हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एक ट्रिक है मैं आपको दे चुकी हूँ। आप बाउ रूल भी यूज कर सकते हैं, बाउजी को याद कर सकते हैं। स्कैंडियम की बात करें, यू कैन सी 4s2 3d1, टाइटेनियम की बात करें 4s2 3d2, वेनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s1 3d5 गाइस, मैग्नीज 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, when we talk about cobalt 4s2 3d7, when we talk about nickel 4s2 3d8, knock exception yet another one, copper 4s1 3d10 and zinc 4s2 3d10, a non transition। स्कैंडियम की बात करें, you can see 4s2 3d1, टाइटेनियम की बात करें 4s2 3d2, वेनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s1 3d5 guys, मैग्नीज 4s2 3d5, iron 4s2 3d6, when we talk about cobalt 4s2 3d7, when we talk about nickel 4s2 3d8, knock exception yet another one, copper 4s1 3d10 and zinc 4s2 3d10, a non transition metal। आपके लिए होमवर्क भी है, ये 3D सीरीज तो भाई बैंग ऑन शुड बी ऑन योर फिंगरटिप्स। कुछ भी पूछा जाए 3D सीरीज के बारे में आपको आना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है ना आने का, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना आए, ठीक है? सो 3D सीरीज सबका बैंग ऑन, आई एम श्योर हाथ इसमें बिल्कुल टाइट नहीं होने वाला है। एवरीबॉडी हैज अ फेयर आइडिया अबाउट 3D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी सिंपल। इन फैक्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस n-1d, आपको समझ में आ चुका है कि क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है d ऑर्बिटल में। आप ऑलरेडी n+l रूल जानते हैं, आप अफबाव जानते हैं, आप ट्रिक जानते हैं। अगर स्कैंडियम की बात करें, देख लीजिए, कोबाल्ट की बात करिए, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर कर रहे हैं वो 3D में आपके पास इनकम्प्लीट आ रहा है, इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल d सबशेल में कह सकती हूँ, इनकम्प्लीट d सबशेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब हम बात करें अगर ns 1 to 2, वो भी आपको क्लियर है कि 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों हम वायलेट कर रहे हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमने याद करे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली बार कर रहे थे। तो भाई बच्चे थे हम। Look at us now, huh? So mature now we are when it comes to the chemistry knowledge. Chemistry में अब हम सच में एक प्रो बन चुके हैं. We know it all right now, isn't it? So you can see, you can check chromium का electronic configuration पहले वाला नहीं होता है, दूसरे वाला बिल्कुल होता है 4s1 3d5। लिखते हुए आप प्लीज इस चीज को इंश्योर करिएगा। आप कैसे भी लिखिए, देखिए आपका सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं अभी इस वक्त, ही आपको प्रॉपर जब आप स्कूल में लिख रहे हैं आपको बिल्कुल एश्योर करना पड़ेगा कि आप 3d5 पहले, आप 3d सीरीज पहले लिख रहे हैं और 3d पहले लिख रहे हैं और फिर 4s लिख रहे हैं। बट जब हम रफ काम कर रहे होते हैं तो हम फटाफट लिखते हैं 4s2 3d5, 4s1 3d5, जैसे हम भर रहे वैसे ही लिखते हैं और फिर जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम ऐसे ही मजे निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट इट इन द हाईएस्ट एन वाला फॉर्मेट। बैलेंस शेल ही बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं इनर शेल बाहर है। ये सब दो चार चीजें ध्यान रखना। और अगर आपका हाथ ऑलरेडी सेट है कि हम इलेक्ट्रॉन निकालने के समय इंश्योरिंग जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हाईएस्ट शेल से निकल रहा है, तो चिल है, गुड है, जैसे भी आप रफ वक्त आपका है, ठीक है? तो क्या है कि 3D और 5D सीरीज में तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन 4D में अगर आप देखोगे तो ये जनरल नहीं होगा, जनरल होगा ये, क्योंकि यहाँ पे पैलेडियम आ जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे ये होता है। तो जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है ये, ओके? ये बन के आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? तो 4D के लिए ये होगा। तो यहाँ पे और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम का फैमिली का होता है मोलिब्डेनम, तो ये वाला होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज़ हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है। कॉपर का है 3d10, ये कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। सिल्वर का है 4d10 5s1, ये भी कॉपर का फैमिली है, फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है। गोल्ड हो गया 5d10, कॉपर का फैमिली का है, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। पैलेडियम जैसे मैंने बोला था 4d10 5s0, राइट? कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल। प्लेटिनम है 5d9 6s1। तो ये कुछ है जहाँ पे आपको एनोमलस दिखेगा, ठीक है? जहाँ पे आपको थोड़ा हटके ट्रेंड देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? चलो जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एस का तो आपको पता है स्फेरिकल इन शेप रहता है, तो ऐसे अगर ड्रॉ कर दोगे तो स्फेरिकल बनेगा। पी का अगर देखोगे तो ये डबल शेप रहता है, डी का देखोगे तो डबल डबल, और एफ का देखोगे तो ग्लोब शेप रहता है। बेसिकली ये इंक्लूडेड नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ये इंक्लूड नहीं, आपको एसपी डी ही देखना होता है। तो अगर आप डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का ये पार्शियली फील्ड या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है? इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स के लिए ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है? जो हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये कुछ इसी रीजन के कारण कि आपका जो डी ऑर्बिटल्स है वो पार्शियली फील्ड रहता है, इसी रीजन के कारण देसो सम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टी में एटॉमिक प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सारे मेटल्स होते हैं, तो मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज होता है वही सब एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाता है, मतलब हाई टेंशन, टेंशन जो हमारा टेंशन होती है, हाई प्रेशर ये झेल सकता है,
हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है, इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहता है। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब इसको आप पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? दैट इज योर मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? इसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? दे आर मेटेलिक क्लस्टर मतलब शाइनिंग कैरेक्टर दिखाएगा, मेटल जैसे शाइन करता है तो ये भी शाइन करेगा। दे आर हार्ड एंड लेस वोलेटाइल, राइट? एंड दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, तो सपोज मेटल आयन है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके बीच में, तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आपका मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगा उतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है? तो क्या है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल डी सबसेल्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, डी सबसेल का इंट्रोडक्शन हुआ है। अब डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका मेटेलिक स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होता है। और जनरल रूल अगर पकड़ के चलोगे तो ये है जनरल रूल कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये होगा जनरल रूल। तो अगर आप देखोगे, अगर 3D सीरीज की बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे क्रोमियम है जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यस और नो, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से क्रोमियम का 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक, उसके उसके आगे आने वाले जो ग्रुप्स है, ठीक है, उसके फैमिली जो है, तो 4D सीरीज में मोलिब्डेनम हो गया, 5D सीरीज में टंगस्टन हो गया, तो उनका भी हाई रहेगा बिकॉज़ ऑफ दिस 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ठीक उसके बाद है मैंगनीज का फैमिली, तो मैंगनीज का 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें डीप देखने को मिलेगा, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डी ब्लॉक में आपको बहुत इरेगुलर ट्रेंड मिलेगा, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन के साथ इरेगुलर ट्रेंड से सेटअप होगा, लेकिन ट्रेंड के ऊपर नहीं, स्पेसिफिकली पूछेगा कि क्रोमियम का क्यों ज्यादा है, टंगस्टन का इतना ज्यादा क्यों है, तब आपको रीजन बताना होगा, तब आपको रीजन बताना होगा, ओके? तो रीजन पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट ट्रेंड नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड तो है ही नहीं, सारे इरेगुलर ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमियम का सबसे ज्यादा है, फिर आपका डीप आ गया मैंगनीज पे, फिर मोलिब्डेनम का है, फिर टेक्नीशियम में डीप आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इस बेचारे के पास 5 है, तो बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है? और फिर टंगस्टन आप देख सकते हो सबसे ज्यादा होता है 3300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा होता है ये। तो ये क्यों होता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज़ दे पोसेस 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा 3d5 4s1। मोलिब्डेनम का लिखोगे तो क्रिप्टॉन 4d5 5s1, और टंगस्टन का लिखोगे तो आएगा xenon 4f14 5d5 6s1। तो क्या 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, ठीक है, इनका मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये बात समझ में आई सभी को? रीजन समझ में आया? तो रीजन ही पूछा जाता है, ठीक है, रीजन ही पूछा जाता है। तो ये था मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, ये था मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा क्यों होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा इसलिए होता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग होता है, और इसको आप देखोगे, इसको रिलेट किया जाएगा किससे सर? इसको रिलेट किया जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के। तो आप देखोगे कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होने के कारण, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली रिलेट करता है आपके मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? जो एंथैल्पी चेंज होगा जब आप 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करोगे और गैसियस एटम बनाओगे, उस 1 मोल एटम को ब्रेक करने के बाद जब आप गैसियस एटम बना रहे हो, उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज हुआ है ना, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इस केस में क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होता है। वो क्यों होता है सर? ये तो आपको पता होगा ना, ये चीज तो आपको पता होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। ये तो सभी को पता है, पता है ये सभी को। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, यस। तो क्या है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ रहा है, अब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है लेकिन इसका शील्डिंग उतना अच्छा नहीं है, तो क्या होगा एज ए रिजल्ट नेट क्या होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या होता है सर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है कि आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बढ़ जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जैसे मैंने बताया कि डी ऑर्बिटल आया तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आया, तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तीसरा क्या है कि डी ऑर्बिटल है, डी सब सेल्स है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण भी आपका मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाएगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन योर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, सारे रिलेटेड है, सारे रिलेटेड है, सारे चीजें रिलेटेड है अपने आप में। ठीक, आई बात समझ में? तो जनरल रूल क्या होगा? जनरल रूल ये होगा कि जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा, और उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सारा का सारा रिलेट कर रहा है किससे? सारा का सारा रिलेट कर रहा है आपका मेटेलिक बॉन्डिंग से, मेटेलिक बॉन्डिंग से, ठीक है? सो नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेंड्स इन दी ट्रांजिशन मेटल, ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो आप देख सकते हो कि मिडिल में सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम आता है, मोलिब्डेनम आता है, टंगस्टन आता है, तो इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका सबसे ज्यादा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो आप बोल सकते हो कि एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितना फेवर करता है, ठीक है, कितना फेवर करता है आपका इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, या फिर कितना फेवर करता है मेटेलिक बॉन्डिंग को। ठीक, सो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रांग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग। एक ही तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना क्रोमियम और मैंगनीज का, अगर देखोगे तो इतना डिफरेंस ले आता है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिकली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो 3D सीरीज मतलब थर्ड सीरीज मतलब 5D सीरीज इज ग्रेटर देन सेकंड डी सीरीज मतलब 4D सीरीज व्हिच इज ग्रेटर देन 3D सीरीज। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग का टेंडेंसी मोर फ्रीक्वेंट हो जाएगा, और दूसरी बात है मास भी तो बढ़ेगा, मोलर मास भी तो बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। सो थर्ड सीरीज का सबसे ज्यादा, दैट मींस 5D का सबसे ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D। ठीक, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट?
अच्छा, आप लोग एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे कि ज़िंक, कैडमियम और मरकरी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है और वैसे ही अगर आप मेल्टिंग पॉइंट भी देखोगे तो बहुत नीचे की तरफ आएगा। तो क्या आप बता सकते हो ये जो ज़िंक, कैडमियम और जो मरकरी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इतना कम क्यों है? ज़िंक, कैडमियम और मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इतना कम क्यों है? क्या आप बता सकते हो? एनीवन? रीज़न क्या-क्या मिला आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का? बस उसी को रिलेट करके आंसर दे दो, मिल जाएगा आंसर। बताओ, बताओ। क्यों, क्यों? इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, हमने रीज़न क्या-क्या बताया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का, उससे रिलेट करके बताओ। किसी को नहीं आता? अरे इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता डी सबसेल्स में, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। वीक मेटालिक बॉन्डिंग बिकॉज़ ऑफ योर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेचारे जिंक का देखोगे तो ये क्या होगा 3d10 4s2, कैडमियम का देखोगे 4d10 5s2, ओके? मरकरी का देखोगे 5d10 6s2। इन बेचारों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगा और वीक मेटालिक बॉन्डिंग के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो सबसे कम रहेगा। आई बात समझ में? देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में अगर आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जवाब देना तो 1 मार्क भी नहीं कटेगा। एक सिंगल मार्क भी नहीं कटेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जवाब देते हो तो। ठीक है? आई बात समझ में? आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट? साजमा, संदीप, शिवानी, गौतम, देवजीत, किसी को कोई भी डाउट? प्रोनाया, कोई भी डाउट? बाकी सब भी रिप्लाई दो। डाउट है तो पूछ लो। देखो डी ब्लॉक में ना ये रीजन पूछा जाता है। इसका ट्रेंड मुश्किल से ही पूछा जाता है। ठीक है? रीजंस वगैरह स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लाके ये ऐसा कैरेक्टर क्यों शो करता है, उसका स्पेसिफिक रीजन पूछा जाता है। पूरा चैट भरा हुआ है संदीप से ही। बाकी लोग भी क्लास में साजमा, शिवानी, गौतम, देवजीत, प्रोनाया, आर यू गाइस स्लीपिंग? व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? जागो ग्राहक जागो। ओनली संदीप इज रिप्लाइंग। यस साजमा, आर यू देयर? साजमा, आर यू देयर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है? डोंट सिट आइडियली। व्हेन यू रिमेन एक्टिव ओवर द चैट तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि डाउन हो जाएगा डाउन। तो चीजें ना समझ में नहीं आएगी, ऊपर से जाएगा बाउंसर। ठीक है? तो रिमेन एक्टिव। हाथ चलाओ तो क्या होता है ना कि दिमाग एक्टिव रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट? उसमें हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है कांसेप्ट जिसका नाम है लेंथेनॉइड कंट्रक्शन वो स्टार्ट होने वाला है। वो सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। क्या सर? लेंथेनॉइड कंट्रक्शन। So let's understand the variation in the size of transition elements. Let's discuss this over this video. अब आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी बातें जो पूरा का पूरा एटॉमिक रेडियाई का हमने आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, ये अपने आप में बहुत सारी बातें कर रहा है। कहने को ये भूल भुलैया है, आप इसमें कुछ और बात करते हुए कहीं और निकल सकते हैं। बट मोटी-मोटी कैसे बातों को निकाला जाए अगर आप किसी डेटा को देख रहे हैं। मेरे साथ देखिए, आप देख सकते हैं कि जनरल ट्रेंड है कि चीजें कम हो रही हैं, मतलब कि देयर इज अ फॉल इन अ पर्टिकुलर ट्रेंड एंड देन देयर इज एन इंक्रीज। इट्स लाइक अ कर्व व्हिच इज कमिंग अप। कर्व की तरह एक नॉर्मल सी टाइप कर्व दिख रहा है हमें, दैट सीज अपवर्ड्स इस तरीके से, कॉनकेव है इस तरीके से। पहली बात। दूसरी बात, अरे यार ये जो 2 चीजें ना यहाँ पे तो हमें दिख रहा है काफी सारा, ये ग्रीन और ब्लू लाइन में तो काफी डिफरेंस है, स्पेस है। बट यार यहाँ पे 4D और 5D की अगर मैं बात करूँ, मैं देख पा रही हूँ कंजेशन है बहुत ज्यादा। दोनों लाइनें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं, बहुत ही पास है। एटॉमिक रेडियाई मतलब जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, सेम ग्रुप की बात करें, ये देख लीजिए, ये और ये। तो 3D में हम उतर रहे हैं। एज़ वी गो डाउन द ग्रुप द साइज इज सपोज्ड टू इंक्रीज फॉर द सिंपल रीजन। क्या रीजन है कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है वो इंक्रीज होता है। अगर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ना यार कि साइज बढ़ेगा। बट यहाँ पे आप देख लीजिए ना, ये दोनों तो ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट बराबर मतलब ये कोई अगर हम देखें ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, और इसका रीजन भी यहाँ पे हम फ्लैश कर करके आपको दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक है। यहाँ से सवाल बनता है इस चैप्टर से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? अच्छा, और आप देख लीजिए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की बात करें तो यहाँ पे साइज बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। तो अब आप देख लीजिए एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड जो है, ये जो 3 ट्रेंड बताए हैं, इसको समझने के लिए मैं जो 3 केसेस आपको बताए, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो 3 केसेस निकलते हैं। अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, अट्रैक्शन इज लेस देन रिपल्शन एंड अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन। आपको अगर मैं ये 1 मिनट के लिए रिस्पांसिबिलिटी दूं, रिस्पांसिबिलिटी कोई बर्डन नहीं है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड यू ऑल हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हाँ, तो भाई सभी शेर लोग जरा ये बताओ, अगर मैं आपको ये ट्रेंड दे रही हूँ और ये 3 केसेस में आपको बांटना हो, तो आप बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा? क्यों यहाँ पे आकर चीजें बराबर सी दिख रही हैं हमें? हाँ, क्यों यहाँ पे हमें साइज बराबर से दिख रहे हैं? और क्यों फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ एटॉमिक रेडियाई? तो डिक्रीज में क्या लग रहा है, जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, तो क्या ये समझ में आ रहा होगा कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा होगा रिपल्सिव फोर्सेस से? जब बराबर दिख रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन के बराबर होगी, तभी कुछ एटॉमिक रेडियाई बराबर से दिख रहे हैं एक पर्टिकुलर डी सीरीज में। और जब बढ़ता हुआ दिख रहा है ट्रेंड, तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि रिपल्शन पक्का डोमिनेट कर रहा होगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन?
कितना चमक रहा है, खुद ब खुद चमक रहा है, तो भाई बॉस जॉब इज डन। ये पूरा ट्रेंड फिर आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पे स्कैंडियम से मैग्नीज तक एक ग्रेजुअल डिक्रीज है, क्यों मैग्नीज से निकल तक एक कांस्टेंट सी वैल्यूज हमें एटॉमिक रेडियाई की दिखती है, और क्यों निकल एंड बियॉन्ड हमें एटॉमिक रेडियाई बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज क्यों है। हाँ, आप देख लीजिए, अगर मैं इनका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सॉरी दिखाऊं, तो आप D1 और D2 को देखिए। हाँ, n-1d और ns इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। मोर इलेक्ट्रॉन्स, न्यू इलेक्ट्रॉन्स है, तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ रहा है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन n-1d एंड रिपल्शंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो इसलिए जब हम बात करें स्कैंडियम टू मैंगनीज, तब वहां पे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय d, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन इंक्रीजेस मोर देन रिपल्शन। जब साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है रिपल्सिव फोर्सेस से, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। अगर बात करें नियरली कांस्टेंट वाली बातों को, तो ऑफ कोर्स रिपल्शन ऑलमोस्ट बैलेंस कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, इसलिए हमें जो साइज है ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है। और यही हम इंक्रीज की बात करें, तो रिपल्शन ज्यादा होने वाला है अट्रैक्शन से। देख लीजिए, रिपल्शन डोमिनेट्स अट्रैक्शन, राइट? नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई इन दिस केस, दैट्स व्हाई रिपल्शन इज वेरी मच डोमिनेटिंग। क्लियर? तो ये समझ में आया 3D सीरीज का। सो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस दो काउंटर एक्टिंग, ठीक है, फोर्सेस है। तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसलिए रेडिया कम होता है। फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होता है, तो ऑलमोस्ट सेम। फिर लास्ट में रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है, तो जिंक की तरफ से बढ़ जाता है, निकल टू जिंक, ये बढ़ जाता है एटॉमिक रेडियाई। आया समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहा है, अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्शन भी होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा। ठीक। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां से स्टार्ट होता है आपका लेंथ कंडक्शन का सीरीज। तो आप देखोगे 4D और 5D, ये रेड वाला है 5D, ये ब्लू वाला है 4D। क्या आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो रेडियाई है वो लगभग सेम है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये किस वजह से वाला हमें तो पता है, डाउन डी ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, तो साइज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5D और 4D का साइज ऑलमोस्ट सेम है। ये क्यों वाला? ये होता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के वजह से। किसकी वजह से सर? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के वजह से। क्या होता है कि F ब्लॉक है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो F है, इसका जो बहुत पुअर शील्डिंग होता है, इम्परफेक्ट शील्डिंग होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जाता है, 14 इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी आएंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से शील्डिंग नहीं बढ़ता, इस न्यूक्लियर फोर्स का शील्डिंग नहीं बढ़ता। तो क्या होता है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका रेडियाई कम हो जाता है, बढ़ने की जगह कम हो जाता है। राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, राइट, कि 5D और 4D का ऑलमोस्ट सेम होता है। द फीलिंग ऑफ 4F before 5D result in the regular decrease in atomic radii because of your lengthenite contraction, and it is because of the imperfect shielding of F electrons. So let's discuss this over this video. ये 5D सीरीज पर, दिस इज योर 3D सीरीज, दिस इज योर 4D सीरीज, and dear students, this is your 5D series. You can see lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, mercury. ये आप देख रहे हैं, बट ये यहाँ पे जर्ग है 57 है यहाँ पे लैंथेनम का एटॉमिक नंबर गाइस, एंड फिर हैफनियम 72। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ये तो। ये कोई नजरअंदाज करने वाला डिफरेंस नहीं है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर लैंथेनम का 57 है और हैफनियम का 72। ये तो हाफने वाला डिफरेंस है भाई। क्यों? क्योंकि भाई 14 एलिमेंट बीच में और आ रहे हैं। कौन से? एफ सीरीज के। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए 4F सीरीज का, जिसको हम लैंथेनॉइड सीरीज भी कह रहे हैं, वो स्टार्ट हो गई है, और लैंथेनम यहाँ पे हमने कहीं जाकर रखा है, जस्ट टू डिपिक्ट कि आपका जो लैंथेनॉइड सीरीज है वो यहाँ पे लैंथेनम के वजह से इसको सीरीज का नाम मिला है। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आने शुरू होते हैं वो जाते हैं एफ में, एफ सबशेल में, जिसकी वजह से आप देख लीजिए एक डिस्पैरिटी आ गई है 5D सीरीज में। 5D सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप महसूस कर सकते हैं काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो एक वेरी वेरी पुअर शील्डिंग, गद्दार दोस्त। एफ डी से भी ज्यादा गद्दार। कैसे? नोट से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एंगुलर नोट्स बताऊंगी, आपको पता है एंगुलर नोट इज इक्वल टू एल एजिमुथल क्वांटम नंबर। कहां पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ, तो आप देख लीजिए ये वाली सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, और ये 5D सीरीज जो है यहाँ पे हमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिलता है पहली बार। तो व्हिच फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? आपको पता ही है कि इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ द एफ सबशेल, राइट? सो लेट्स सी द रीजन। द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल। शील्डिंग, इम्परफेक्ट शील्डिंग के कारण आपका ये सिनेरियो क्रिएट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लेंथेनम जो है, लेंथेनम में 4F नहीं आ रहा है, L में 4F नहीं आ रहा है, ठीक है? इसका क्या बनेगा? xenon, ठीक है? इसका तो 4F 0 ही है, तो 5D 1 6s 2, तो इसमें 4F नहीं आ रहा है। तो ये एक बात का ध्यान रखना, इसमें कोई लेंथेनाइड कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर आप जनरल ऑर्डर लिखोगे तो इस केस में यही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना कि लेंथेनम का ज्यादा होगा इट्रियम से और उसका ज्यादा होगा स्कैंडियम से, क्योंकि लेंथेनम में कोई एफ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। समझ में आई बात? तो इस बात का ध्यान रखना, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ये गलती मत कर देना। ठीक। सो ड्यू टू लेंथेनाइड कंडक्शन द रेडियस ऑफ 4D सीरीज इज सिमिलर टू 5D सीरीज बिकॉज़ ऑफ दिस इम्परफेक्ट शील्डिंग या इम्परफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग। तो जैसे जैसे आपका एंगुलर नोड बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आपका एंगुलर नोड बढ़ेगा, तो बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, ठीक है, आपका स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग का जो क्षमता है वो घटेगा। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे तो एस पी फिर डी और फिर एफ आता है। तो अगर आप एल की बात करोगे तो एल इसके लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। तो जैसे जैसे आपका एल का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका शील्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो शील्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अभी अगर हम एक एग्जांपल ले ले टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम का, ठीक है, ये तो 3D का बिलोंग करता है, ये 4D 5D। जनरली क्या होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो तो साइज बढ़ना चाहिए था, सेल बड़ा है, लेकिन अगर आप देखोगे
अमूमन, ठीक है, क्या होता है कि बनना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे टाइटेनियम का है 147 पिकोमीटर, ज़िरकॉनियम का है 160 पिकोमीटर, हैफनियम का 159 पिकोमीटर, मतलब इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इसका रीज़न क्या है भला? इसका रीज़न ये है कि ये महाशय आ गया है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन शो करने के लिए। ये महाशय आ गया है, ठीक है? जिसके वजह से आपको क्या दिखेगा? 4D और 5D सीरीज़ का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट बराबर देखने को मिलेगा। ये है आपका एक एग्जांपल। तो इस लेवल का ये क्या है? फ़र्क दिखाता है, ठीक है? तो रीज़न अगर पूछोगे तो शील्डिंग पावर ऑफ द ऑर्बिटल डिक्रीजेस, राइट? शील्डिंग पावर डिक्रीजेस, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इंक्रीज़ ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन से हट हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ ही होगा, तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। पहला रीज़न ये है साइज़ डिक्रीज़ होने का। दूसरा रीज़न अगर आप देखोगे टाइटेनियम और ज़िरकोनियम, ठीक है? यहाँ पे डी, पी और एस था, यहाँ पे भी डीपीएस है। तो यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ मूव करते हो तो यहाँ पे एफ भी आता है, डी भी आता है, पी भी आता है, एस आता है। तो इन टोटल यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब 32 प्रोटॉन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़ रहा है सिर्फ 18, यहाँ पे बढ़ रहा है 32। तो उसी की वजह से भी देयर इज अ डिक्रीज इन योर रेडियाई। डिक्रीज इन योर रेडियाई। एफ का होता है 14, राइट? इसका होता है 10, इसका होता है 2 6, इसका होता है 2। तो बेसिकली क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन आता है, राइट? 18 इलेक्ट्रॉन आता है जनरली आगे ऊपर के केस में, लेकिन नीचे के केस में कितने आ रहे हैं? नीचे के केस में कितने आ रहे हैं? 32 आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन देखने को मिलता है, रेडियाई डिक्रीज होता है। आई बात समझ में? दोनों रीजन आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। लेंथेनाइट कंडक्शन का दो रीजन है, एक स्क्रीनिंग और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। किसी को कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में, देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे रेडियाई रेडियाई जो है, रेडियाई घट रहा है। अब रेडियाई हम किसको मानते हैं पता है? जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम एटॉमिक रेडियस बेसिकली मानते हैं वो डिस्टेंस। अब न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। अब सोचो, सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है? अगर इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए तो ये ज्यादा स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। इसका अगर फोर्स बढ़ जाए, इसका अगर पावर बढ़ जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका अगर चार्ज बढ़ जाए तो ये नेगेटिव को ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा अपनी तरफ। यस और नो बताओ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ ऑर्बिटल जब इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके आया, 14 प्रोटॉन लेके आया, ठीक? 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा लेके आया। अब 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा लेके आने की वजह से, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है और बढ़ गया, जिसकी वजह से ये मोर स्ट्रांगली इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ रहा था, वो जो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आ रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके न्यूक्लियर फोर्स को रोकने के लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं है, उसका स्क्रीनिंग इतना इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से, ठीक है, आपका जो लेंथेनाइट कंडक्शन वो देखने को मिलता है। आई बात समझ में अभी? मोटा-मोटी ये समझो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और करीब आ गया, ठीक? तो डेफिनेशन अगर देखोगे तो ये है कि लेंथेनाइट कंडक्शन एसेंशियली कंपेंसेट द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू द लेंथेनाइट कंडक्शन 4D and 5D ऑलमोस्ट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लाइक लेंथेनाइट कंडक्शन की वजह से जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, और क्या हुआ 3D और 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। और इस लेंथेनाइट कंडक्शन की वजह से ही आपका 4D और 5D का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक? ये है आपका लेंथेनाइट कंडक्शन। तो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम सभी को पता है। तो जैसे-जैसे आप अलोंग द पीरियड जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, तो साइज घटते रहेगा। अब वॉल्यूम घट रहा है, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट। और डाउन द ग्रुप क्या होता है कि साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन साइज भी घट रहा है, तो मास बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, तो मतलब क्या डेंसिटी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट भी मूव करोगे तभी भी डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाओगे तभी भी आपका डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है? तभी आपका डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये था एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया की बात। नेक्स्ट आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? किसी को अगर कोई भी पॉइंट में समझ में ना आया हो, प्लीज लेट मी नो। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम ट्रेंड देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लेफ्ट टू राइट क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका बढ़ेगा। वही बात है, स्क्रीनिंग इतना हो नहीं रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखेगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज अकम्पेनिड बाय फीलिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप कॉपर क्रोमियम एंड मैंगनीज का देखोगे एंड कॉपर और जिंक का देखोगे, देयर इज अ गुड लेवल ऑफ जंप। अच्छा, लगभग अच्छा खासा डिफरेंस है। ये क्यों है? ये इसलिए डिफरेंस है जो अपने को पता लगेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन जो निकलना है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से निकलेगा, जबकि क्रोमियम का हाफ फिल्ड। जिंक के केस में भी जो इलेक्ट्रॉन निकलना है एस से वो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन कॉपर का हाफ फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा मुसीबतें होती है, राइट, एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड, बिकॉज़ फुल्ली फिल्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू योर हाफ फिल्ड। सो रीजन ये है कि क्यों होता है वो हम देखेंगे कि जिंक और कॉपर का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में इतना डिफरेंस क्यों है। सो लेट्स डिस्कस दिस ओवर दिस वीडियो। ये देखिए, मैं 3D सीरीज को टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। जिंक ताबड़तोड़ सबसे ऊपर, बाहुबली। जिंक आप देख सकते हैं बहुत ऊपर है, 906। वी कैन ऑब्वियसली कम अक्रॉस अ रीजन कि जिंक का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होगा। 4s2 3d10, 4s2 3d10, बच्चा बच्चा जानता है, s भी फुली फिल्ड है, d भी फुली फिल्ड है, वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स द वेरी रीजन वी आर कॉलिंग इट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्यों हम इसको नॉन ट्रांजिशन बोल रहे हैं? देख लो बातें इसकी, सब एक जैसा बिहेव कर रही है, अलग ही इसकी टशन है, अलग ही स्टाइल मार रहा है। देखिए 906, तो इसलिए नॉन ट्रांजिशन छोड़ो, बाकी देख लेते हैं, है ना? अब आप देख लीजिए, मैं अगर हाईलाइट करूं यहाँ पे 745, 736, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ये कॉपर और जिंक वाला जो फंडा है कि क्या रीजन है यहाँ पे जिंक का हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है, रीजन कहां से आया है, कहीं से नहीं, उसकी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, है ना? 3d10 4s2 जो कि आपको पता है एक फुली फिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है और इसलिए मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसलिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये तो पहला हुआ जो कि बेहद सिंपल था रीजन। कुछ और देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको पूछा जाए क्रोमियम और मैंगनीज में क्या कंपेयर कर सकते हैं कि मैंगनीज का जितना होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा निकल रहा है 717, तो यहाँ पे क्या रीजन होगा? इनफैक्ट वेनेडियम और क्रोमियम में आप देख लीजिए 650 या 653, है ना? तो आप देख लीजिए व्हाई डज मैंगनीज हैव एब्नॉर्मली हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू क्रोमियम। तो यहाँ पे अब अगेन फुली फिल्ड है, इसमें भी ये फैक्टर आपको ऑब्वियसली चमकेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सवाल इन पे बन सकते हैं बट लॉजिकल है, हमारे पास ऑलरेडी एक बेटर बेस्ट टूल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हमेशा निकालिए, हमेशा लिखिए, आधे सवालों के जवाब कॉन्फिगरेशन में छुपे होते हैं और बाकी आंसर्स छुपे होते हैं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में। जैसे एक कॉन्सेप्ट आज हमने किया, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं n-1d और ns को मिलाकर उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, ये कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट हमने आज बात करी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, दो चीजें होती हैं, एक होती है ब्रिक, एक होता है सीमेंट। ब्रिक हुआ डायरेक्टली आपको सवाल दे दिया जो कि चमक रहा है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से है। सीमेंटेड मटेरियल ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सीमेंट का काम करती है, चीजों को जोड़ती है। तो आप ये वाला खुद ही निकाल सकते थे, है ना? फुली फिल्ड है इसलिए मोर स्टेबल है, इसलिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और अगर हम बात करें कैन वी कमेंट ऑन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम गोइंग डाउन द ग्रुप भी आप देख लीजिए कि कैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड, है ना? डाउन द ग्रुप कुछ गड़बड़ है यहाँ पे जो कि हमें देखनी बहुत जरूरी है। डाउन द ग्रुप क्या चीज है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये देखिए, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। ये देख लीजिए, लैंथेनम टू मर्करी ऊपर है ये, हाँ? और ये देख लीजिए हमारे पास सबसे ऊपर तो ये नॉर्मल है, इसमें से लेट मी यू नो टेक 5d and 4d टुगेदर। 5d and 4d में से आयनाइजेशन एंथैल्पी 5d की कम होनी चाहिए। एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। व्हाई? साइज बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। बट ये देख लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा है। रीजन दोबारा आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक होगी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। इसलिए आप देख लीजिए ये जो है यहाँ पे 5d एब्नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। ऐसे ही मर्करी, जिंक, कैडमियम इनकी बात करें तो फुली फिल्ड है। यहाँ पे हमें ये पता है ऑलरेडी, आंसर कहाँ लाई कर रहा होगा इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि उनका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ठीक है? सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन भी कह सकते हैं। इनका देख लीजिए रेडिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है बट न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इरेगुलर ट्रेंड हमें दिख रहा है। मैंने आपको बोला कि बहुत रेगुलर ट्रेंड नहीं, एक इरेगुलर ट्रेंड है। इरेगुलर ट्रेंड इन द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑब्जर्व्ड फॉर 3d and 4d सीरीज। तो ये आप इस डेटा में से कुछ और बातें भी निकाल सकते हैं। पैलेडियम आप देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ मदद कर रही हूँ देखने के लिए कि कैसे ग्राफ को देखें। पैलेडियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, D10 कॉन्फिगरेशन है। तो समझ में आया जिंक का क्यों रहता है हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। और मैंगनीज का क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा जो कंप्लीटली फिल्ड है। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 5d का यूजुअली क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो जिसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। लेकिन इस केस में अलग है, 5d का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है एज कंपेयर टू 3d एंड 4d बिकॉज ऑफ योर लैंथेनाइड कंट्रैक्शंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। किसी को कोई भी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस पॉइंट? नो डाउट। तो देखो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको और एक बार बता देता हूं, ठीक है? तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो क्या होता है ना कि 4f आ गया अभी, ठीक है? 4f 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन भी तो लेके आया है। अब क्या है कि न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इनर इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। तो क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा एस के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है? सबसे बाहरी की तरफ। तो क्या है कि एफ तो 14 इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसका चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है? लेकिन इसका जो स्क्रीनिंग करने का मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, राइट? इट इज एग्जीक्यूटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब ये बाहर की तरफ है इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा यहाँ की तरफ। लेकिन इसके बीच में ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, और भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, और भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। तो यूजुअली क्या होता है कि ये बहुत ही बाहर की तरफ है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और बाकी सारे अंदर की तरफ है। तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है इसको जितना न्यूक्लियर फोर्स फील होना चाहिए था उतना फील नहीं होता, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना ये इसको शील्ड कर देते हैं कि हमें भी तो, हम भी खाएंगे, आप इसको क्यों दे रहे हो? हमें तो भूखे, हमें भी तो नेगेटिवली चार्ज है, हमने क्या गुनाह किया था, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा कौन करता है? एस करता है कि हमें दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो पास रहता है। फिर पी करता है, फिर डी करता है और एफ करता है। तो एफ के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा, लेकिन ये इसका मतलब ये बहुत खुले दिल का है, ठीक है? इसको देना है तो दो, मेरे को कोई इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दोगे फिर भी काम चलेगा, इस टाइप का है। तो इतना वो स्क्रीनिंग नहीं करता इस न्यूक्लियर चार्ज को। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, जिसकी वजह से आपका लैंथेनाइड कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, किसी को कोई भी डाउट? चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टेक नोट ऑफ इट, कि किसका सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा? ऑब्वियसली बात है जिंक का होगा, तो जिंक का तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कंटेंट ज्यादा था, सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ एंड कंट्रैक्शन था, इसको फिर से जाके आप एक बार रिवाइज कर लेना। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सो अटेंड द लाइव क्लास रेगुलरली, प्रैक्टिस एंड रिवाइज द कांसेप्ट्स एंड गिव द टेस्ट व्हेनेवर इट इज सैलरी टू यू। सो थैंक यू ऑल, बाय, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। The question says which of the following electronic configuration is that of a transition element. So basically transition element is what? Transition element is actually d block elements. Okay. Transition elements means d block elements. So why they are called transition elements?
So earlier the definition of transition element was like this. Basically they belong, they are in between S block and then between P block, and they show properties, or they resemble the properties of S block also and some properties of P block also. So that's why they were called transition elements. Now the definition has been updated. Now the transition element definition is that the element should contain unpaired electron in the d subshell. Okay, the element should contain unpaired electron in d subshell either in the ground state or in the common oxidation state. Okay, in the ground state or in the common oxidation state. So that's the definition for transition element. Okay. Now let's search for the transition element according to configuration. So this is 1s2, 2s2, 2p6, that is 10 electrons right now. Then we are having 3s2, 3p6, that is 18 electrons. Then we are having 3d10, okay, that's 18 plus 10, that is 28 electrons. Then 2 electrons of 4s, that is 30, and 4p6, that is 36 electrons. So basically this is the configuration of krypton. Okay, so that's the configuration of krypton, and krypton is a p block element. Okay, by directly we can see that the last electron is actually entering the 4p subshell. So that's why it can be said it is a p block element, and we know that krypton is a noble gas which belongs to p block. So that's not a transition element. Second one is 1s2, 2s2, 2p6, 10 electrons, 3s2, 3p6, 18 electrons, then 3d10, that is 28 electrons, then 4s2, 30 electrons, and then 4p1, that is 31 electron. Okay, that is 31 electron, and that 31 electron is basically of gallium. Okay, so that's basically gallium. Again, gallium belongs to boron family, and it is not a d block element, it is actually a p block element. So option B is also incorrect. Now option C is 1s2, 2s2, 2p6. So again 10, then 3s2, 3p6, 18, 18 plus 2, 20, and 20 plus 2, that is 22. Basically this is titanium, and actually titanium is a d block element, since here we can see there are 3 d2 electrons. So obviously we can say this d subshell is not filled completely, therefore it is actually a d block element, and it is a transition element also. So option C is correct. Then we are having 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6. Basically this configuration is not correct. Okay, before filling 4p, 3d should be filled firstly. Okay, because 3d, if we apply n plus l rule here, so 3 plus 2 basically 5, and for 4p it is 4 plus 1, that is 5. So n plus l values are same. Now we are going to check for the n. The higher the n, the higher will be the energy. So basically 4p is having n is equals to 4, therefore 4p is at a higher energy. Okay, 4p is present at a higher energy, therefore 3d should be filled first, and that makes this configuration actually wrong configuration. So this is not actual configuration. It should be 4s2, 3d, 6, and then some 4p. Okay. Then after 3d is filled completely, then we are going to fill 4p, not before 3d. So option D is also incorrect, since the configuration is incorrect. So the correct answer to this question is option C. Now the question says the elements, transition elements, have characteristic electronic configuration which can be represented as. So we all know that every block is actually having a specific configuration. Like S block is having ns1 to 2, D block is having ns2, np1 to 6. So similarly, D block elements are having actually, you can say D block is having a general configuration, and the general configuration is very simple. So the general configuration of D block elements is, so the general configuration goes like this: n minus 1 D 1 to 10. Okay, and then ns 1 to 2. Okay, now ns can have 1 electron also, ns can have 2 electron also, n minus 1 D 1 to 10. But this general configuration, actually this has one exception. Okay, and that exception is of palladium. Okay, that exception is of palladium, that is Pd, which belongs to nickel family, that is nickel, palladium, and then platinum, and it actually belongs to which period? It belongs to 5th period. Okay, and the configuration for palladium is actually krypton 5s0, not like that. It is krypton 5s0 and 4d10. And if I check for nickel, it is 4s2, 3d8. So basically, all the 2 electrons present in S subshell are transferred to D subshell. Therefore, its configuration becomes 5s0, 4d10, and the only element which is not having any electron in the S subshell, which makes it different. Okay, one more thing you want to like to know about nickel family is that in nickel family, all the 3 elements, okay, I'm not talking about the 4th element, okay, that's basically the 7th period. I'm talking about nickel, palladium, platinum. This family is actually having all the elements different configuration. All the 3 elements are having different configuration. Basically, they do not follow a general configuration. Like nickel is having 4s2, 3d8. Then palladium, as seen, it is 5s0, 4d10. Okay, then we are talking about platinum. Platinum is having 6s1, 5d9. So there is no configuration, or there is no general configuration for nickel family. And one type of question has been asked in one of the exams regarding nickel family, which of the family is having all the elements different configuration. Okay, so you need to remember this family, which is very important. Right now, the general configuration is n minus 1 D 1 to 10 and ns 1 to 2. So the correct answer goes to option D, that is n minus 1 D 1 to 10 and ns 1. The question says the electronic configuration of palladium is. Okay, so let's talk about palladium. Basically, palladium, firstly, it belongs to, okay, palladium, actually the atomic number is 46 here, and it belongs to 4d series, and 4d series means 5th period. Okay, it belongs to 5th period, and the group number is 10. So that's all the thing we can discuss about palladium, and it belongs to nickel family. You can say that is nickel, palladium, and then we are having platinum. So the general the configuration for palladium, actually this is very much important. Okay, why it is important? In general, we see it belongs to nickel family. So nickel, palladium, and platinum, and we also see that in general family is having a similar type of configuration. Like nickel is having argon 4s2, 3d8. Okay. And then we think of palladium also resembling the same type of configuration, that is 5s2, 4d8, but that's not the case with palladium, and actually that's not the case with platinum also. Okay, so these three elements are having different configuration, and they're not having any general configuration. So the configuration for palladium is, okay, let's firstly discuss the configuration of palladium. So the noble gas which is before palladium is krypton, which is 36, and then it is 5s0, 4d10.
So that's the configuration of palladium, which is very much exceptional. And this actually and this element is the only element in D block which is having no electrons in S subshell, and all the electrons are in D subshell. So that's the configuration for palladium. And talking about platinum, its configuration is also not so similar. Basically, the configuration is 6s15d9. So I'm just writing the outer configuration, not the whole configuration. So 6s15d9. So they are not having any similarity in their configurations. Okay, they are not having any similarity in their configuration. So that's the question, and the correct answer to the question is krypton, that is 4d10 and 5s0. So option D is the correct answer. Remember the configuration of krypton, platinum, not krypton, nickel, palladium, and the question says, which group does not contain transition metals? Okay, so what is transition element? So basically, transition element are those elements which have unpaired electron present in the D subshell, either in the ground state or in the common oxidation state. Let's consider zinc, cadmium, and mercury. Okay, why I'm telling you this? Zinc is having a configuration of 4s2 3d10. So basically, I'm writing the outermost. Okay, and this is having 5s2 4d10. Then this is having 6s2 5d10. Okay, so that's the configuration for zinc, cadmium, and mercury. Okay, now remember one thing. So the first point you need to remember is that for an element to be called transition element, there should be unpaired electron present either in the D subshell, either in the ground state or in the common oxidation state. Now in ground state, the D is basically the configuration is D10 D10 D10. That is completely filled. Okay, but in case of common oxidation state also, basically they possess +2 as the common oxidation state, which makes basically the configuration change to 3d10 4d10 and 5d10. Okay, so basically they are not having any unpaired electron either in the ground state also or in the common oxidation state, that is +2. That's why they are not considered as transition elements. Remember this thing, zinc, cadmium, and mercury, they are not considered as transition element. They are not considered as transition element. Why? Because they are not having any unpaired electron either in the oxidation state, common oxidation state, or either in the ground state. Okay. Now what we are talking about first is the group 5. If this is a transition elements or transition metals or not. So basically group 5. Okay. Group 5 is actually our vanadium family. Okay, that's vanadium family. So that is vanadium, niobium, and then we are having tantalum. Okay, so that's vanadium, niobium, and tantalum. That is group 3. Group 5, how? Configuration stands like this: 4s2 3d3. So the group number in case of D block elements is the number of electrons in S plus number of electrons in the D. So 2 plus 3 is 5. That's why this is vanadium, niobium, and tantalum. So obviously they belongs to D block element and they are having unpaired electron in the D subshell. Therefore, they are transition element, in which according to the question it is a wrong option. Now then we are having group number 7. So group number 7 is Mn, Tc, and Re, that is manganese, technetium, and rhenium. Okay, again they are having unpaired electron in the D subshell. That's why they are also considered as transition element, which is not correct according to the question. Group number 11. Okay, group 11 is the you can say noble metals family. Okay, noble metals means the precious ones which are used for making ornaments. Yeah, that's correct. Silver and gold, that is copper, silver, and gold. Okay, copper, silver, and gold. And yet they are also considered as transition elements because in the common oxidation state they are actually having unpaired electrons present. Okay, in the ground state it is having 3d10 3d10 and 3d10, not 3d10 4d10 and 5d10. But in the common oxidation state they are actually having unpaired electrons present, and that's why they are also called as transition elements. So option C also incorrect according to the question. Group number 13 is, that is our boron family. So boron, aluminium, gallium, indium, and then thallium. So basically they are p block elements. And for transition elements, okay, one more condition you can say, to belong to transition element you must be an element from D block except these. Okay, all elements in the D block element in the D block are transition elements except zinc, cadmium, mercury. They are not considered as transition elements, but yet they are D block elements. Okay, so group number 13, this is p block, is actually the correct answer to this. The question says, which of the following elements are not transition metals? Okay. So what are transition metals or transition elements? Basically earlier, okay, the older definition of transition element was used to be that the element which belongs to D block. Okay, as they were saying that some of the D block elements shows properties of S block and some of them shows property of P block. So basically they were in between S and P. That's why they were called transition elements. So basically transit, okay, in between. Okay, transit means in between. That is, they were having properties of S block also and they were having properties of P block also. So that's why they were called transition elements. Now, according to updated definition, the updated definition says presence of unpaired electrons. Okay, presence of unpaired electrons in D subshell, either in ground state or in common oxidation state. Okay, in common oxidation state. So the element, if it is to be called a transition element, then it should possess either, you can say, electrons in the ground state, unpaired electrons in D subshell. That's the condition. That's the mandatory condition, that it should contain unpaired electron in D subshell either in the ground state or in the common oxidation state. So that's the condition for transition element. Okay. So now there are three elements which do not satisfy this condition. That is zinc, cadmium, and mercury. Basically, zinc is having configuration that is argon 4s2 3d10. Then it is krypton. Okay, krypton 5s2 4d10, and then it is xenon 6s2 5d10. Okay, so that's the configuration for zinc, cadmium, and mercury. Now, if you can see that in ground state, this D is actually fully filled. Okay, this D is not having any unpaired electrons, so it is fully filled. Now, let's talk about the common oxidation state. So that's the violation. So that's the condition in ground state. So they are not having any unpaired electrons in ground state. Let's talk about common oxidation state. So general or common oxidation state for these metals is actually +2. Now, if you are going to remove 2 electrons, then it will be removed from S subshell. That is from here.
Okay, if you are going to remove 2 electrons from S subshell, then it is also going to have fully filled d orbitals, that is 3d10, 4d10 and 5d10. The configuration would be like this. So in the common oxidation state also, they are not having any unpaired electrons, which makes them actually not to be called as transition elements, or you can say they do not satisfy the statements of transition elements. So that's why they are not considered as transition element, not transition element yet, but they are d block elements. Okay, basically they are d block elements. So all the d block elements are transition elements? No, that's not correct. Okay, because these are d block elements, but they are not considered as transition elements. All the transition elements belongs to d block. Yeah, that's correct. Okay, obviously transition element will belong to d block only. So the correct answer to this question goes option B, that is zinc, cadmium and mercury. They are not transition elements. Other options: gold, silver, copper, they are transition elements. Scandium, titanium, vanadium, they are transition elements. Iron, cobalt, nickel, they are also transition elements. In fact, copper, gold and silver, they are not having any unpaired electron in case of ground state, but actually in the common state they are having. So that's why the statement is either in the ground state or in the common oxidation state. So our option A, that is copper, gold, silver, they contain unpaired electron in common oxidation state. So option B is the correct answer. The question says, which 3D series transition element has the highest melting point? Okay. So we all know what is melting point. Basically, it is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium, and that temperature is called as melting point. Okay. So now what are the factors affecting melting point? So to do the process of melting, basically we are going to convert a solid into a liquid. So what we are going to do, we are going to break the forces of attraction that exist in solid. Okay. Now in case of transition elements, okay, for 3D transition elements, so transition elements basically possess metallic bonding. So the first point I can write is that metallic melting point, not metallic bonding. Melting point is directly proportional to the forces of attraction in solid. Forces of attraction in solid. As the forces of attraction is going to increase, the melting point is also going to increase. Now, what are the forces of attraction in transition elements? Basically, transition elements, transition metals do form metallic bond. Basically, metallic bond is present in case of transition element. Okay, so metallic bond is present in transition in case of transition element. Now, what are the factors which affect metallic bonding? Okay, what are the factors which affect metallic bonding? So basically, metallic bonding is due to the attraction of atom to the electrons. Okay, to the electron cloud of other atom. Now we say that as the number of unpaired electrons are going to increase, the extent of metallic bonding gets increased. Okay, what is the logic? As the number of unpaired electrons are going to increase, the metallic bonding extent is going to increase. So I can say that metallic bonding is directly proportional to number of unpaired electrons present. Okay, number of unpaired electrons present. So that's the logic for metallic. That's the logic for metallic bonding. Okay. So in case of 3D series, okay, in case of 3D series, so what is the order of melting point? So the elements are scandium, and we are having titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. Okay. Now the maximum number of unpaired electrons are till manganese. Okay, until manganese. So as the number of unpaired electrons increases, the extent of metallic bonding increases, and as the extent of metallic bonding is going to increase, the melting point is going to increase. So it increases. It increases like this. Okay, but actually not manganese. The melting point is highest for chromium because due to some structural reasons, manganese melting points decreases abruptly. Okay, so the chromium is the element which is having the highest melting point, since it is actually having highest number of unpaired electrons too. So that's why its melting point is also high, and then the order goes on decreasing. So like this, because after manganese, the pairing of electrons starts to take place. As the electrons are getting paired, there are less number of unpaired electrons present, and as the number of unpaired electrons are getting decreased, therefore the extent of metallic bonding is getting decreased, and hence decreasing the melting point. So basically that's the exception here. But yes, the chromium is the one metal which is the chromium is the one transition element in the 3D series having the highest melting point, and the lowest is for zinc, and the reason is very simple, because it is not having any unpaired electrons present. Okay, so the chromium is one. And you can remember this by graph also. This is melting point, this is atomic number. So it goes like this. Okay, it goes like this, and then there is a decrease. So this is basically chromium, and the decrement is manganese, and then again it increases, that is iron, and now then it is also going to decrease till zinc, iron. So that's how you can remember. Basically, it is a shape of like M. Okay, so you can remember like this only. So the question is asking for the highest. So as I told you, option B is the correct answer. That is chromium. The question says the melting points and boiling points up to middle of 3D series increases, decreases, remain same, or no regular trend. Okay. So basically, melting point and boiling points, they are directly influenced by the forces of attraction, or you can say the packing. Whenever we are talking about melting point and boiling point, it depends upon the forces of attraction only. Now, in case of d block elements, the force of attraction or the type of bond which is found is actually metallic bond. Okay. So metallic bond is found in case of transition element, or you can say d block elements. Now this metallic bond this extent of metallic bond, we can write also that extent of metallic bond. So extent of metallic bond is directly proportional to the presence of number of unpaired electrons. Okay, that is directly proportional to the number of unpaired electrons present. And as I told you, the boiling point and metallic point, they are influenced by the forces of attraction. So we can say that boiling point also, as well as the melting point also, it is directly proportional to extent of metallic bond. Okay, now we're talking about 3D series. So 3D series scandium, then we have titanium, vanadium, chromium, manganese, then iron, cobalt, nickel,
copper, and lastly zinc. Let's write the configuration, not the configuration whole. We are writing about S and D only because that number of unpaired electrons basically from the S and D only. So this is 4s2 3d1. This is 4s2 3d2. This is 4s2 3d3. Now chromium, the exceptional configuration, that is 4s1 3d5. Manganese 4s2 3d5. Then iron 4s2 3d6. Then here 4s2 3d7. Nickel 4s2 3d8. Copper again the exceptional configuration, that is 4s1 3d10. And then lastly zinc, that is 4s2 3d10. Okay, so that's the configuration. Now, if you see till chromium, from scandium to chromium, we can see that it was a D1, then D2, then D3, and then D5 and 4s1. So basically, till chromium, we find the maximum number of electrons. Okay, basically maximum number of unpaired electrons, you can say. So here, till chromium, maximum number of unpaired electrons are present, and therefore only boiling point and melting point till the middle of the series, they firstly increases. Okay, then the pairing starts obviously from here to here. Boiling point and melting point, they are going to decrease, but there is some exception. Melting point is going to decrease, and that exception is of manganese only. Okay, that exception of manganese, basically in case of manganese, the melting point and boiling point, they drop abruptly. Abruptly means the melting point and boiling point of manganese is lower than that of iron also. So that's basically the exception part. But in general, what we see till the middle of the series, due to increase in the number of unpaired electrons, the melting point and boiling point first increases, and then due to pairing of electrons, as the number of unpaired electrons decreases, the melting point and boiling point also decreases. So the correct answer is up to middle of the 3D series, option A, that is. The question says, which of the following is not a member of 3D transition series? Okay. So first we are going to write 3D transition series. So 3D transition series basically belongs to fourth period. First thing to remember that 3D transition series belongs to fourth period, and the elements are, the first one is scandium, that is Sc. Then it is titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, Fe, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay, so this is 3D series as seen. Now the question says, which of the following is not a member of 3D transition series? Also, one thing to note that basically D block elements are generally called transition elements, and transition elements means that they should have unpaired electron either in their ground state or either in their common oxidation state. Okay, now zinc, cadmium, and mercury are not considered as transition element because they don't have unpaired electron in D subshell either in the ground state. For zinc, for that family, actually the configuration goes like this. For that family, basically for zinc family, the configuration is N-1 D10 and NH2. So they don't have any unpaired electron in the D subshell either in their ground state or in their common oxidation state. That is why they are not transition elements. Firstly, earlier transition elements was used as they are between S block and P block in the periodic table, and they have some properties of S block elements, or they resemble some properties of S block elements, and they resemble some properties of P block elements. That's why they were called transition elements, basically meaning in between both S and P. But right now the definition has changed. The definition says they must have basically a transition element is that which is having unpaired electron in the D subshell either in the ground state or in the general common oxidation state. Okay, right now the question says, which of the following is not a member of 3D transition series? So titanium, as yes, it belongs to 3D series only, so it is a 3D series element, and it is wrong because the question is asking not. Again, vanadium, this also belongs to 3D series, so this is also incorrect. The copper, this also belongs to 3D series, so again this is also incorrect. And the silver, which actually belongs to which series? Yes, you are correct. It belongs to 4D series, or you can say fifth period, and the family is of copper, silver, and gold. So the correct answer is option D.
The question says electronic configuration of Fe3 plus iron is. Okay. So basically iron is a d block element and it is also a transition element. Okay. Transition element means the element which are having unpaired electron either in the ground state, basically unpaired electron in d subshell. Okay. Unpaired electron in d subshell either in the ground state or in the common oxidation state. Okay. So the configuration for iron whose atomic number is 26, basically the configuration is 1s2, 2s2, 2p6. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Okay. So that's the configuration for iron, or it can be written as argon 4s2, 3d6. That is more comfortable. Okay. Then we are going to check for Fe3 plus. So basically 3 electrons are removed from iron. So from where we are going to remove 3 electrons? Since basically the removal of electron is always taken from outermost shell. Okay, the electron will be always removed from the outermost shell or from that subshell basically which is having a higher value of n. Okay, higher value of n or the outermost shell. Here outermost shell is actually 4s, not 3d. Now you might be thinking that we fill electron in 4s first and then in 3d because that's according to Aufbau principle or the energy rule. But the electron is always removed from that shell which is farthest from the nucleus, or you can say outermost shell. Okay. Okay. So 2 electrons will be removed from 4s and 1 electron from 3d. So thereby making the configuration of iron plus 3, that is 4s0 and 3d5. When it is 0, we don't need to mention at 0. This is 3d5. So that's the configuration of iron 3 plus iron, and this is basically the common oxidation of iron, common oxidation state of that iron. So the answer to this question is option. So the question says the number of d electrons in Fe2 plus iron is not equal to that of. Okay, and these are the 4 options. So first we are going to write what is the configuration of Fe2 plus iron. Okay, so basically iron is, okay, the atomic number of iron is 26. And the configuration goes like this. So we are directly going to write argon. Okay, the noble gas, that is up to 18 electrons. Then it is 4s2 3d6. Okay, argon means 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6. Then 4s2 3d6. That's the configuration for iron. And to form iron plus 2. Okay, so iron 2 plus configuration will be very simple. The 2 electrons will be removed from the outermost shell, and here outermost shell is S, not D. Remember one thing. Okay, electrons are actually filled firstly in 4s, then in 3d according to the energy. Okay, n plus L rule. But electrons are always removed from the outermost shell, or you can say which is having the higher value of n, or you can say principal quantum number. So 2 electrons are removed from move from 4s. So therefore the configuration becomes argon and 3d6. Okay, now we are having 6 electrons in d subshell. Okay, fine. So the question says which of the number of d electrons in Fe2 plus is not equal to that of p electrons of neon. So configuration of neon is 1s2 2s2 2p6 and its atomic number is basically 10. Okay, so let me write atomic number also. It is 10. So the configuration is 1s2 2s2 2p6, and this neon is having 6 electron in p subshell, while iron 2 plus is also having 6 electron in d subshell. So there are same number of electrons according to the condition. Now we are having s electrons. So let's deal with s electrons. Okay, because it has not mentioned total outermost shell or total electrons. So the configuration of Mg is, it is 12, and the configuration is 1s2 2s2 2p6 and then 3s2. Okay, now we see the outermost shell. Okay, this S is actually having 2 electrons, but if I consider all the S subshells, then 2 plus 2 plus 2, that is 6. Okay, so therefore total number of S electrons of Mg is equals to the number of electrons of iron 2 plus in D subshell. So that's also correct, means that's matching. So option A and option B are actually incorrect. Then option C says D electrons in Fe, so D electrons in Fe is same as in Fe2 plus. So that also goes incorrect. Let's see for Cl minus. So basically chlorine is 17. Okay, so chlorine is 17, and after accepting one more electron, it becomes Cl minus, and it is actually having 18 electrons. The atomic number remains same. Okay, remember one thing: loss of electron or gain of electron does not change atomic number; it remains same. Basically, the configuration is changed. So Cl minus is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p8. Not 3p8. Sorry, not 3p8. It is 3p6. Okay, Cl minus becomes, basically Cl minus attains the configuration of argon. So the configuration becomes 1s2 2s2 2p6 and then 3s2 3p6. Now if I check p electrons of, okay, now I'm going to check p electrons of Cl minus, basically 6 and 6 here. So it becomes 6 plus 6, that is 12. So it does not match with the number of d electrons in Fe2 plus, which is 6. So option D is the correct answer.
The question says which of the following element belongs to second transition series of the periodic table. Okay, so second transition series basically means 4D series. Okay, so the first transition series is 3D series, second one is 4D, and third one is 5D, and the fourth one is 6D, that is 7th period. Okay, so the elements of 3D series are, so 3D series starts from scandium, then we are having titanium, vanadium, chromium, manganese, okay, iron, CO, nickel, copper, and zinc. So this is 3D series. Then we are having 4D series. So 4D series starts from Y, that is yttrium. Then we are having zirconium. Then we are having niobium. Then we are having molybdenum, technetium. Then we are having ruthenium, rhodium, palladium, okay, silver, and then we are having finally cadmium. Okay, so that's 4D series, and 5D series starts from basically lanthanum, hafnium. Then we are having tantalum, tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum. Then we are having gold, and finally we are having here mercury, that is H. Okay, so that's 3D, 4D, and 5D series. So this is basically first transition series. 4D one is second transition series, and 5D one is third transition series. So basically they are asking for the second transition series. So nickel belongs to 3D, that is first transition series. Option A is incorrect. Then gold belongs to 5D, that is third transition series. So obviously this is also incorrect. Lanthanum again belongs to 5D series. So obviously this is also incorrect. And niobium belongs to 4D series, and that is second transition series. So option D is the correct answer. The question is asking which of the following D block elements has half-filled penultimate as well as valence subshell. So out of the given D block elements, which of them contains half-filled subshells in the outermost as well as in the penultimate shell? That is the second last shell. Alright, so we are going to talk about the following elements: copper, silver, gold, and chromium. Let us start with copper and followed by silver and gold. All these three elements are in the same group, in the same vertical column in the periodic table, modern periodic table. Let us write down the atomic numbers here. Atomic number is 29 for copper, 47, that is 29 plus 18 for silver, and 47 plus 32, that is 79 for gold. Alright, these are the atomic numbers. Now about the configurations, we have up to argon it will be 18 electrons, 3p6, and after that 3d10, 4s1, this is the exceptional configuration. Similarly for silver we have up to krypton, we have 36 electrons. After that, 4d10 and 5s1. And similarly for gold, we have xenon, then 4f14, 5d10, 6s1. That is 54 and 14, 68 and 78 and 179. All right. So this is the configuration. Now, as we can see, a trend is there. They have the common electronic configuration of the valence and the penultimate shell. So in all of these, penultimate shell is completely filled. Right? Penultimate shell is completely filled, or I should say that apart from this, what I should say is that none of the subshells in penultimate shell are half-filled. All of them have the outermost shell, the valence shell, which is containing a half-filled S subshell. But in the penultimate shell, that is the N-1 shell, what we can see is the D subshell is completely filled, and before that it is also completely filled. In silver also the D subshell is completely filled, right? The 4D, that is the N-1, and in gold also we have the we don't have any D subshell or any subshell which is half-filled. All right. So options A, B, and C will be wrong. Option D, chromium, will be correct answer. How? Because chromium also has this. Chromium also has the exceptional configuration, exceptionally stable configuration, that is atomic number is 24 and configuration is up to argon 18 electrons, then 3d5, 4s1. Now due to this exceptional configuration, what I can see is the outermost shells 4s subshell is half filled, and in the penultimate shell we have the 3d subshell which is also half filled, because 3d subshell contains 5 orbitals, 5 degenerate orbitals, and all of them will be singly occupied in case of 5, so it will be exactly half filled. Similarly for 4s we have a single electron, so 3d5 and 4s1. All right, so chromium will be the correct answer for this question. The question says why the atomic radii of the second and the third transition series are almost same. Okay, so we know that second and third transition series, that is 4D series and 5D series, are having actually almost same atomic radius. Okay, so we are going to talk about that. First, the options are: first is actinoid contraction, second is radioactive nature, third one is lanthanoid contraction, and the option D is filled orbital. Now radioactive nature is already eliminated because in case of D block there are not so much of radioactive elements. Majorly the radioactive elements lies in F block. So obviously this option is actually eliminated. So option D is incorrect. That is not going to make any sense out of this. Okay. So now we are having 4D series and we are having 5D series. Okay, let's talk about any one of the group. Let's say we are having PT and not PT. We are having group number 10, that is PT, PD, and PT. Now basically the size is same. Okay. Now the fifth 5D series is actually belongs to 6th period. Okay, it belongs to 6th period, and 5D series starts from lanthanum, which is 57, and after lanthanum it starts with the lanthanoid series. Okay, it starts with lanthanoid series, that is cerium to lutetium. That is cerium to lutetium from 58 to 71. And in case of F block, basically the last electron enters in the F subshell.
Okay, now the shielding order we know that is S is having more shielding than P and then D and then F. That is F is the subshell that is having lowest shielding. Okay, not subshell. Basically, the electrons present in F subshell are having least shielding. Okay, and due to this low shielding, the Z effective increases very aggressively. Okay, so the increment in Z effective is very more. Now, as I come down the group in general, we are talking about in general trend. This is fifth period. Okay, and 5D is having sixth period. On moving from fifth to sixth period, there is an increment in the shell number. Okay, there is an increment in the shell number, and due to that increment, size should increase. Okay, the what I told you, due to the increment in the shell number, size should increase. Okay, so that's the first factor. Now from cerium to lutetium, basically the electrons enter in the F subshell and the shielding of F electrons is very poor, and due to which we see that from cerium to lutetium size gradually decreases, and this this decrement in the size is actually called lanthanide contraction. So this is actually lanthanide series, and the contraction is called lanthanide contraction. That is decrement of size from moving from cerium to lutetium. Okay, so this contraction is actually having now what happens here is after 71, okay, hafnium starts. Okay, after 71, hafnium starts. That is the d block element. Now these all the d block elements from hafnium. Okay, from hafnium is actually having 14 F electrons. Okay, all the elements from hafnium is actually having 14 F electrons, and these 14 F electrons are having very poor shielding, and due to this poor shielding, there is a decrement in sizes of d block elements. Okay, so the first point was on moving down the group, the size increased, but due to lanthanide contraction, the size actually do what? It decreases. So there is an increment in the size also, and there is a decrement in the size also. So size almost remains the same. Okay, so basically there is an increment and there is a decrement. So that's why the size almost remains same in case of 4D series and 5D series. So that's why radius of 4D and 5D series are almost same. But you need to remember one thing, that here comes yttrium. Okay, and above that is scandium. So yttrium is having more size than scandium. So there is no exception, or there is no such kind of contraction in 3D to 4D series. But in case of 6th period of 5D series, we have seen there is a lanthanide contraction. But this lanthanide contraction does not affect the regular trend in case of group number 3rd, that is scandium, yttrium, and lanthanum. And the reason is very simple. It can be clearly seen that there are no F electrons present in case of lanthanum. Okay, there is no F electron present in case of lanthanum. So there is no question of poor shielding in lanthanum. That's why the trend is regular. That is down the group size increases. Therefore, scandium is the smallest one, then yttrium, and then lanthanum is the highest. It is having the highest radius. And the reason is simple: no F electrons. But after lanthanum from hafnium, we can see there are F electrons present, and due to that F electron shielding becomes very poor, and that poor shielding leads to a decrement in size, and there was increment in size on moving from top to bottom. So as I told you, size was increased and then it was decreased, so it almost remains the same. And the contraction and the reason for that decrement in the size, or this actual no change in the size of similar sizes, is lanthanide contraction. So the correct option is option C, that is lanthanide contraction. Okay, the question says, which of the following element has highest first ionization energy? Okay, so basically, what is ionization enthalpy or ionization energy? So ionization energy is energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom, or you can say to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. So basically, it is a required energy, means it is a positive. Okay, so delta H will be positive for this process. So it is asking for the highest first ionization enthalpy. So we are having scandium, vanadium, copper, and zinc. So basically, these are all you can say 3D series elements. Okay, now in case of 3D series, in general we see, okay, so the general trend for a period, okay, from going to in left to right in a period, is generally that as Z effective increases in a period, so therefore ionization energy also increases. But in case of D block, okay, all the D series, there are some anomalies, or you can say abnormal behaviors can be seen in case of ionization energy, and that too is the reason for, like, you can say stable configuration is one of that reason, or the decrement, firstly the size is decreasing, then it is constant, and then it is increasing, and that could be one of the reason for the change in ionization energy. So let's write firstly what are the 3D series elements, that is scandium first, then titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and finally zinc. So these are the elements of 3D series. So first we are going to remember this thing, that in general, on moving from left to right, there is the increase in Z effective, so therefore ionization energy also increases. Basically, Z effective is the effective force of attraction. So if the force of attraction is increasing on the outermost electron, so you need to apply more energy, you have to give more energy to just overcome that force of attraction. Okay, so firstly we are going to talk about only IE1. Okay, the question is asking about first ionization energy only. So the trend is, as I told you, just moving from left to right, we are going to increase the ionization energy, and then we are going to see the exception. So on moving left to right, titanium is going to have more ionization energy than scandium. Now comes the first exception. Okay, and the exception is that titanium is having more ionization energy than vanadium. Okay, so this is the first exception. Okay, now let's continue with the trend, that is the regular trend. Then chromium will be having more I than vanadium, then manganese will be having more I than chromium, then goes iron. So this was the first exception. Okay, that is vanadium having lesser IE than titanium. Now comes the second exception, that is iron is having more IE than cobalt, and actually cobalt is also having more IE than nickel. So basically this is altogether another exception of IE first, and you have to remember this. Okay, so that's very important. You need to remember this order because it can be asked directly only. And then goes with copper, that is the regular trend. Then it is zinc. So that's the order for the first ionization energy in case of 3D series. Now the scandium is the one which is having lowest IE.
in that series. Okay, scandium is the one which is having lowest IE in the series, and the zinc is the one which is having highest IE in the series. And the reason is very simple, since zinc is having, firstly, the number of electrons in zinc are more, therefore more effective. Also, it is having 3d10 completely filled and 4s also completely filled, that is 4s to 3d10. So that's why it is more difficult to remove an electron from zinc. Okay, so that's highest and that's lowest. So let's check for the option. So scandium is not having the highest, it is actually the lowest. So option A goes wrong. Then comes vanadium, copper, and zinc. So as I told you, zinc is having more IE in 3D series. Okay, so zinc is the highest, and zinc is the element having highest ionization energy. So zinc is the correct answer. Option B and option C are also incorrect. Okay, you can compare the order also, that zinc is the highest, then copper, then it is vanadium, and then it is scandium. So that's the order, but zinc is having the highest IE in this option. Okay, the question says which of the following has maximum first ionization enthalpy, and the options are: first is titanium, the second is manganese, third one is vanadium, and the last one is nickel. Okay, so what is ionization enthalpy? So ionization enthalpy is the energy required to remove one electron or to remove an electron from outermost shell of a isolated gaseous atom. Okay, so basically you are going to provide the energy. So that's the required energy, and that is for delta H for the ionization energy is positive. So always we have to supply energy. You are not going to get energy out of it. Okay. So we are actually talking about 3D series. Okay, so the question is asking which one of the following is having maximum first ionization energy, and these all the elements are of the 3D series. Now in general we see moving from left to right in a period, Z effective increases. So Z effective is you can say effective nuclear charge or net force of attraction. So the net force of attraction is increasing, therefore the nucleus is holding that electron more tightly. So you have to apply more energy to get rid of that attraction force. So in general we see on moving from left to right, Z effective increases, and due to that increment, ionization energy also increases. Okay, there are some other factors for ionization energy. That is one of the factors, stable configuration. Okay, in case of D block, okay, in case of D series, the behavior of ionization energy is not regular, or the trend is actually not regular. There are some abnormalities. Okay, abnormal behavior can be seen, that is due to, again, one of the reasons, stable configuration. And in case of D electrons or D elements, the shielding is one of the dominant factor which makes some changes. Okay, so 3D series is basically scandium first, then titanium, not TO, titanium Ti, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. Okay, so that is our 3D series. So we have to compare the first IE, that is IE1. We have to compare IE1. So if you are seeing the trend of IE1, don't take that as the trend of IE2 and IE3 also. The trend of IE2 for these elements is not equal or not same as IE1, and that is also not same as IE3. So both of them, okay, not both of them. So all the IE1 and IE2 and IE3 are not having regular trend or not the same trend. Okay. So in general, we are going to remember that the first ionization energy on moving from left to right in a period is going to increase. So obviously, titanium is going to have more ionization energy than the scandium. But here comes the first exception, and the exception is this: the titanium is having more ionization energy than the vanadium. Okay, so that's the first exception. Basically, vanadium should be having more IE than titanium, but it's again an exception, or you can say abnormal behavior, and the abnormal behavior is due to the formation of vanadium plus iron. Okay, now then we are going to follow the same trend. That is chromium. Then we are going to have manganese. Then manganese is having less IE than iron, and now comes the second exception, and that is iron is actually having more IE than cobalt, and cobalt is having more IE than nickel. So basically, this is altogether second exception of this sequence. Okay, second exception of this trend, and then copper is having more IE than nickel as according to the regular trend, and then zinc is having the highest ionization energy in the period. So zinc is the element which is having highest IE1. Okay, highest IE1. As I told you, there could be some abnormalities, or the behavior is not same for IE2 and IE3. And the scandium is the element which is having lowest IE1. Okay, so that's the trend of IE1 for 3D series. Now the question says maximum first ionization enthalpy. So we are having titanium, manganese, vanadium, and nickel. Now from all the four elements, the element which is present at the extreme right, okay, is nickel. Is nickel. So basically, the answer to this question is that nickel is actually having the highest IE, and the reason is very simple, highest IE1, and the reason is very simple, due to high effective nuclear charge. Okay, it is having less value than cobalt and less value than copper also, but it is having highest value from all the four elements, and the reason is highest effective nuclear charge in case of all the four elements. So option C is also incorrect, option B and option A is also incorrect. Okay, so the order can be written as nickel is the first one, then it is going to be manganese, and then after manganese it is going to be titanium, not vanadium, as seen is the exception, and then it is going to be at last vanadium. Okay, so that's the trend, or that's the order of IE. So I will write this order only: Ni, then Mn, then we are having not vanadium, then we are having titanium, and then vanadium at the last. So that's the complete order for this four elements.